Hi friends, in this session we'll start with once again few definitions of enthalpy. लास्ट सेशन के अंदर हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर लिया था व्हाट एक्चुअली मीन्स बाय एंथैल्पी. एंथैल्पी के बाद हमने डिस्कशन किया था सीपी एंड सीवी. सीपी एंड सीवी के रिलेशनशिप भी देखेंगे. आज बहुत सारी एंथैल्पी के डेफिनेशंस देखने हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. Means in each and every chemical reaction, let's take example A plus B gives C plus D. This is a simple chemical reaction. So what is the change in energy, what is the change in enthalpy that we have to discuss. So let's start. Heat of reaction is defined as the amount of heat evolved or absorbed when quantity of the substances indicated by chemical equation have completely reacted. Once again, heat of reaction is defined as the amount of heat evolved or absorbed when quantities of this substance indicated by this chemical equation have completely reacted. The heat of reaction is actually the difference between the enthalpies of the product and the reactant. When the quantities of the reactant indicated by this chemical equation have completely reacted, mathematically it is defined as enthalpy of reaction is nothing but delta H summation of HP minus HR. Now why there is a summation? If A gives B, only one reactant is converted into one product. At that time you need not require any summation of this. Simple HP minus HR. But when A plus B converted into C plus D, at that time the enthalpy of C plus enthalpy of D minus enthalpy of A plus enthalpy of B. So basically यहाँ पे C plus D की enthalpy का summation होगा minus summation of reactant A plus B की enthalpy का summation होगा, and दोनों का difference product minus reactant you get reaction enthalpy. उसी के continuation में many a time instead of simple enthalpy of reaction we use the word standard enthalpy of reaction. एक चीज दोस्तों याद कर लीजिए, जहां जहां स्टैंडर्ड आएगा वहां वहां H0 हो जाएगा. मींस H के ऊपर 0. फाइन. सो H0 stands for standard enthalpy. वो किसी का भी हो, standard enthalpy of formation, standard enthalpy of vaporization, standard enthalpy of sublimation and anyone. स्टैंडर्ड का मतलब क्या होगा? अब यही रिएक्शन स्टैंडर्ड के केस में कैसा होगा देखिए. द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन is the enthalpy change for a reaction when all the participating substance are in their standard state. Means reactant उसके original standard state में होने चाहिए. And one more thing, the standard state of substance at the specified temperature and its formed at 1 bar pressure. So temperature specified means generally temperature होता है 25 degree Celsius temperature, 1 bar and all the substances are in their standard state. That is entitled as standard enthalpy of reaction. So ये एक और definitions याद रख लीजिएगा, standard enthalpy of reaction. ओके और आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सा आ रहा है? हीट ऑफ फॉर्मेशन. फॉर्मेशन का मतलब C plus O2 की CO2. CO2 फॉर्म करना. फाइन. सो एलिमेंटल स्टेट से मॉलिक्यूलर स्टेट में जाना, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन. सिंपल. CH4 तो C plus 2H2 that is CH4. Ammonia N2 plus 3 mole of H2 you get 2 mole of ammonia. So this is all about your formation. It is the quantity of heat evolved or absorbed when the 1 mole of the substance is formed from its constituent elements. Most important, elemental state से molecular state में जाना. Once again, it is the quantity of heat evolved or absorbed when 1 mole of substance is formed from its constituent elements under the given condition of temperature and pressure. It is denoted by HF, delta HF, when the temperature and pressure are 25 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. The heat of formation under this condition is called standard heat of formation. It is usually denoted by delta H0. मैंने बताया था ना, जहां जहां वर्ड यूज करेंगे हम स्टैंडर्ड, वहां वहां आपका आ जाएगा डेल्टा H0 F.
सिंपल मीन्स गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार एटमॉस्फेयर प्रेशर हुआ तो वो बन जाएगा डेल्टा H नॉट F. द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड HCl आर एज फॉलोज. तो आपको सभी डेफिनेशंस के नीचे जहां जहां मैंने रिएक्शंस मेंशन किए हैं एक एक रिएक्शंस प्रिपेयर करके रखने हैं और एक एक रिएक्शंस लिखने हैं. फाइन. सो उसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा H0 इज समेशन ऑफ डेल्टा H0 ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट. सो देखिए यहाँ पे क्या चेंज आ गया, यहाँ पे आ गया H0. वाई? बिकॉज वी आर मेजरिंग दिस एट स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. फाइन. नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर चले जाते हैं, दैट इज हीट ऑफ कंबशन. सो नाउ हीट ऑफ कंबशन, it is the amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of substance is completely burned in air or oxygen. Once again, it is the amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of substance is completely burned in air or oxygen. Example के तौर पे CH4 plus O2 gives CO2 plus 2H2O delta H minus 192. So always remember here in case delta H is always negative. याद रखिएगा. C2H6 plus 3.5 O2 gives this plus this. Delta H is minus 372.8 kilocalorie. So the enthalpy of heat combustion as the number of applications some are as follows. Now next is important one, that is calorific value of food and fuels. मीन्स फूड एंड फ्यूल्स. बेसिकली हम खाना खाते हैं तो उसमें से एनर्जी मिलती है हमें. सो दैट इज कैलोरिफिक वैल्यू. कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि सर दिस इज टू हाई कैलोरी कंटेंट फूड. कैसे पता चल गया हाई कैलोरी कंटेंट फूड? बिकॉज आप लोगों ने शायद बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा, जैसे 5 स्टार है, डेयरी मिल्क है, या फिर बार आते हैं बहुत सारे जिसके अंदर पीनट्स होते हैं. सो हाई कैलोरी इज प्रोड्यूस व्हेन यू हैव दिस 1 बार. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विथ कैलोरिफिक वैल्यू. वो क्या होता है, फूड में से कैसे कैलोरिफिक वैल्यू मिलती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल, दैट ऑल्सो गिव्स यू सम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन इट्स कंप्लीट कंबशन. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस टर्म दैट इज कैलोरिफिक वैल्यू. Energy is needed for this working of all the machine. We are also one kind of machine. In our body, lots of mechanical as well as biochemical reactions are going on and on and on 24/7. To carry out such kind of reaction, we required food supplement. And by means of food supplement, we get some amount of energy. Even human body is no exception. Coal, petrol, natural gas, etc. serves as a principal source of energy for man-made machine. The food which we eat serves as a source of energy to our body. The energy released by the combustion of food or fuel is usually compared in terms of their combustion. The energy per gram, it is known as calorific value. It is known as calorific value. The amount of heat produced in calorie or joule when 1 gram of substance is completely burned in oxidation or in the presence of oxygen. When methane burned, we get 890.3 kilojoule per mole energy. This is the chemical reaction. Fine. So basically यहाँ आपका definition हो गया. The energy released by the combustion of food or fuel usually compared in terms of combustion energy per gram. It is known as calorific value. एंड कंबशन की तो अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन कैलोरी और जूल व्हेन 1 gram of substance, basically it's a food or fuel, is completely burned in the presence of oxygen or oxidation. So this is all about your calorific value of food and fuels. Next definition, heat of neutralization. Really very interesting one. सबसे पहले चीज न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है. न्यूट्रलाइजेशन मतलब when 1 mole of acid is treated with 1 mole of base. Stoichiometry 1:1 होना चाहिए, that is HCl plus NaOH. मान लीजिए 0.1 molar 10 ml HCl when titrated again same 0.1 molar NaOH, तो आपको 10 ml ही चाहिए just because stoichiometry is 1:1.
So the amount of energy released when the neutralization takes place, that is entitled as heat of neutralization. It is the amount of heat evolved when one equivalent of an acid is neutralized by one equivalent of base in fairly dilute solution. Once again, it is the amount of heat evolved when one equivalent weight of acid neutralized by one equivalent base fairly dilute solution. As for example, neutralization reactions are always exothermic reaction. ये चीज याद रखिएगा. That's why delta H is always negative. So in terms of neutralization, delta H value is negative. सिंपल केमिस्ट्री लैब में आप ब्यूरेट पिपेट से जो टाइट्रेशन करते हैं फिनोफ्थलीन के प्रेजेंस में, वही रिएक्शन HCl plus NaOH, you get NaCl plus H2O. 10th standard chapter number 3 acid base and salt. आपको पढ़ाया गया था when acid is treated with base you get salt plus water, but reverse is not feasible. So here in case delta H कितना है, minus 13.7 kilocalories released when 1 mole of HCl treated with 1 mole of NaOH. So the heat of neutralization of a strong acid against a strong base is always a constant, that is 13.7 kilocalorie or 57 kilojoule per mole. It is because in dilute solution all the strong acid and base are ionized completely. Ionized completely का मतलब पानी के अंदर जब भी आप HCl डालोगे that is H plus plus Cl minus, and whenever you add NaOH you get Na plus plus OH minus. So NaOH, H2O is formed, and Na plus plus Cl minus you get NaCl is formed. So thus the heat of neutralization in such case is actually the heat of formation of water. जैसे H plus कहाँ से निकला होगा दोस्तों, एसिड में से, just because HCl is nothing but H plus plus Cl minus and NaOH is nothing but Na plus plus OH minus. So HCl releases H plus, NaOH releases OH minus, H plus OH minus you get H2O. So H plus plus OH minus gives H2O. Delta H is equal to minus 13.7 kilocalorie. Two more definition, that is heat of solution and heat of hydration. Now heat of solution, name itself suggests what actually means by solution. Solute plus solvent is equal to solution. So definition is, it is the amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of the solute is dissolved completely in excess amount of solvent, usually water. अगर वाटर होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, अगर सॉल्वेंट होगा तो हीट ऑफ सॉल्वेशन होगा. वंस अगेन, अगर सॉल्वेंट के रूप में वाटर हुआ तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बोला जाएगा. अगर कोई सॉल्वेंट हुआ लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल और एनी ईथर और समथिंग लाइक दैट, दैट इज हीट ऑफ सॉल्वेशन बोला जाएगा. वंस अगेन डेफिनेशन रीड करते हैं. It is the amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of the solute is dissolved completely in the excess amount of solvent, usually water. Example quote किए हुए हैं. NH4Cl plus H2O you get NH4Cl. Delta H is this and BaCl2 gives this. Next is heat of hydration. The heat of hydration is, it is the amount of heat evolved and absorbed when 1 mole of anhydrous or the partially hydrated salt combines with required amount of mole of water to form a specific hydrated. Once again, it is the amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of anhydrous or partially hydrated salt combined with required number of moles of water to form specific hydrated. That is CuSO4 plus 5H2O gives CuSO4 dot 5H2O. So this is all about your next two definitions. और आगे बढ़ते हैं next definition के लिए. Now we are going to start with change in enthalpy at phase change. Yes, phase change का मतलब solid to liquid, liquid to gas. So 3 definition most important for your school examination concern. 110% इसमें से एक डेफिनेशन आएगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और हिट ऑफ वेपराइजेशन, हिट ऑफ फ्यूजन, हिट ऑफ सब्लिमेशन. डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिट ऑफ वेपराइजेशन.
नाउ वेपराइजेशन का मतलब क्या होगा दोस्तों? व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग गैस is known as vaporization. So minimum energy required to convert 1 mole of liquid to its corresponding gas is known as vaporization. Exact definition लिखना पड़ेगा. तो definition कैसा है? The amount of it required to vaporize 1 mole of liquid at the constant temperature under the standard pressure, that is 1 bar, is called standard enthalpy of vaporization or molar enthalpy of vaporization. So that is delta H VAP, that is first 3 letters of vaporization. ऊपर नोट करना मत भूलिएगा, just because we are using the word standard enthalpy, that's why we'll put a 0 or not over here. When a liquid is allowed to evaporate, it absorbs heat from the surrounding and the evaporation is accompanied by the increasing enthalpy. Fine. फिर नीचे example दिया हुआ है. Simple H2O when liquid converted into gas, you require this many amount of energy. Fine. Next, thus the change in enthalpy when the liquid change into this vapor state or when the vapor changes to this liquid state is called heat of vaporization. Next, one more definition, that is heat of fusion. नेक्स्ट इज हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन किसके बारे में बोला जाता है? फ्यूजन बोला जाता है सॉलिड टू करस्पॉन्डिंग गैस. द एंथैल्पी चेंज accompanied by melting of 1 mole of solid substance in standard state is called standard enthalpy of fusion or molar enthalpy of fusion. So that is delta H FUS for fusion 0. When a solid is allowed to melt, solid to liquid, fine, ice का best example आप quote कर सकते हो. It changes into the liquid state with the absorption of heat. When a liquid allowed to freeze, it change into the solid with the evolution of heat. That is here in case enthalpy is increases, obviously here in case enthalpy is decreases. Best example H2O ice में से liquid plus 1.44, उल्टा कीजिए लिक्विड टू आइस माइनस 1.44. नेक्स्ट हीट ऑफ प्रेसिपिटेशन. ये हीट ऑफ प्रेसिपिटेशन बाद में लेते हैं क्योंकि सबसे पहले वेपराइजेशन देखा, फ्यूजन देखा, अब सब्लिमेशन देख लेते तो फेज चेंज कंप्लीट हो जाएगा. सो हीट ऑफ सब्लिमेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा H SUB is the change in enthalpy when 1 mole of solid substance sublimate at a constant temperature under the standard pressure, that is 1 bar. Sublimation, solid to direct gas, naphthalene balls, iodine crystal, they all are camphor, they all are the beautiful example of sublimation. So this is the definition of standard heat of sublimation. Next, sublimation is the process in which the solid on heating change directly into the gaseous state below its melting point. Heat of sublimation is the substance in amount of heat absorbed by conversion 1 mole of solid is directly into the vapor. Best example मैंने बताया था iodine solid, iodine crystal, solid to gas, delta H is plus 62.39 किलो जूल. फाइन. सो एक छोटा सा डेफिनेशन के बाद एक छोटा सा इक्वेशन है, शायद कहीं न्यूमेरिकल के अंदर आपको काम में आ जाए. ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा. डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन इज नथिंग बट it's always a summation of delta H fusion plus vaporization. Once again, delta H of sublimation is always delta H fusion plus vaporization. अब जो बीच में एक डेफिनेशन बाकी थी वो चेक कर लेते हैं, that is heat of precipitation. Now precipitate, अब सभी को पता है precipitate, केमिस्ट्री लैब में आपने शायद देखे भी होंगे या फिर आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा. It is defined as the amount of heat liberated in the precipitation of 1 mole of sparingly soluble substance when the solution in suitable electrolyte are mixed in it. That is best example BaSO4 white color के precipitate गिरेंगे, that is delta H is equal to minus 4.66 kilocalorie. Once again definition repeat कर रहा हूँ. It is defined as the amount of heat liberated in the precipitation of 1 mole of sparingly soluble substance when the solution of suitable electrolyte are mixed. So this is all about your today's session. सारी की सारी डेफिनेशंस कम से कम 2 से 3 बार लिख के
प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में और भी डेफिनेशंस बाकी है, वो डिस्कशन करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन। थैंक यू।